So flame is on and I have put around 6 spoons of sarson oil in this. Let it heat, then we'll add the spices. Now the oil is hot. Let's add the spices. So along with onion, I will also add some green chilies, around 5. 1 teaspoon of salt and half more. The onions are as of now golden and they are losing their water as well as their oil which was there. So we can now add spices. I have a very small spoon, so I have added 3 spoons of this. Half of the kala mirch, black pepper. So I'll add up dhania. And I'll add a very little amount of lal mirch. Lal mirch basically I don't prefer. I only prefer green chilies. So यहाँ पे मैंने बहुत ही कम अमाउंट में लाल मिर्च ऐड किया. Now mix it all. अभी ऑनियंस ने तेल छोड़ा हुआ है तो साथ में वो पक जाएगा सारा मसाला. Masala is almost done. If the masala sticks to the base, अगर ये चिपकता है, so you can add a little water. But still no, we are good, so we can omit that. Let it cook a little more. थोड़ा सा और पकाते हैं इसे. So let's check it. मसाला हो ही चुका है. It is sticking to a base a little, so you can see it. थोड़ा चिपक रहा है हल्का हल्का, right? We can add a little of water here. Done. हमारा अनियन भी पक चुका है, मसाले भी. I used approximately 2 बड़ा साइज का टमाटर डाला इसमें मैंने. So मैं इसे लेटे ढक रहा हूँ. Make sure this covers the whole vessel. So 3 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो काफ़ी हद तक टमाटर हमारे मशी हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल गल चुके हैं. तो अगर नहीं गलते हैं तो you can press it like this. टमाटर पक चुका है अच्छे तरह से. एंड देखिएगा ये ऑयल छोड़ रहा है अपना इस तरह से. एंड राजमा वाइट चित्रा टू द मसाला. लेट मी ऐड सम वाटर. 50 ml of water in this, including the water जो मैंने राजमा को पकाते वक्त डाला था. So thickness चाहिए. Then I'll put it for on flame till the water boils. ये पानी जब तक पक जाएगा
तब तक मेरा राजमा रेडी हो जाएगा। सी द कलर। So now you see it is boiling, and now we can just turn off the heat. गार्निश करते वक्त या फिर सर्व करते वक्त जब हम देंगे किसी को, तो इट लुक्स नाइस। मैं इसकी हीट ऑफ कर रहा हूँ कम्प्लीटली। हरा धनिया मैंने चॉप किया था, इसी ऊपर से डाल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें बटर डाल रहा हूँ, अराउंड 15 से 20 ग्राम के आसपास। सो